Dear students, while talking about the causes of the rise in the population, as we are looking in detail, we are trying to dig out what are the real reasons that have been responsible for the increase in the population. Just before a few minutes ago, we were talking about the child labor as a societal issue that is in the mind of the people, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. उसके बाद मोर्टालिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ मोर्टालिटी पे जो कंट्रोल है, एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसी तरह से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं. फर्टिलिटी आप सब समझते हैं कि एक प्रोसेस है अबाउट द बर्थ ऑफ द बेबी, अबाउट द हाउ द चिल्ड्रन आर born. So according to the WHO data, more than 180 million couples in the developing countries, they suffer from the primary or the secondary infertility. The couples have not been able to give birth to the children because of the certain medical issue that may exist in a man or in a woman. और दुनिया में 180 मिलियन ऐसे कपल्स आज भी हैं जो कि या बहुत प्राइमरी या थोड़ी सेकेंडरी, जिनको इनफर्टिलिटी इश्यूज जो हैं. इनफर्टिलिटी ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे अवेयरनेस ऑलरेडी कम है, जहाँ पे जो आपके कल्चर है, जो आपका सर्टेन ट्रेडिशन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, यहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टिग्मा बिकॉज somebody is not able to give birth to a child, especially the जो ज़्यादा इसमें जो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है विदाउट नोइंग द मेडिकल रीजंस, वो ख़वातीन को ज़िम्मेदार इस तरह ठहराया जाता है. इसको हम सोशल स्टिग्मा भी कहते हैं. सो सोशल स्टिग्मा ऑफ childlessness lead to the isolation and abandonment of in many developing countries. तो ये एक सोशल स्टिग्मा के तौर पर ये चीज़ जो है हमारे सामने आती है. जैसा कि मैंने आपको कहा, इसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है ख़ास तौर पे ख़वातीन को. सो डिफरेंसेस बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर इमर्जिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अवेलेबिलिटी इन द इनफर्टिलिटी केयर एंड डिफरेंट सोशल कल्चर वैल्यूज सराउंडिंग प्रोक्रिएशन एंड चाइल्डलेसनेस. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारा डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर. जैसे जैसे जितना जो मुल्क डेवलप है, उन्होंने इनफर्टिलिटी के इशू पे काबू पाया है, and they have been able to treat the couples, to treat the men if they have any medical issues due to which they are unable to give birth, or if this is a woman जो है वो जो है वो उनके जो बर्थ का एक प्रोसेस है उसमें से वो नहीं जो है वो गुजर पा रही, शी इज़ नॉट एबल टू बिकम प्रेगनेंट. तो वो कंट्रीज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द साइंस, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी and because of the advancement in the fertility treatments, ये countries जो हैं they are pretty much able to introduce lots and lots of methods through which fertility now is possible. And that, देखो पुराने वक्तों में जब ये चीज़ें होती थी तो इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका ट्रीटमेंट्स हो सके. आज इतने एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसी वजह से अब जाहिर है आबादी में फिर इजाफा होगा अगर फर्टिलिटी जैसे इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज पे भी काबू पा लिया गया है. पाकिस्तान का शुमार आज एक ऐसे मुल्कों में होता है जो हमें कहना चाहिए कि यहाँ पे हमारे बड़े शहरों में अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक्स मौजूद हैं, जहाँ पे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है. आज से कई साल पहले पाकिस्तान में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जैसा कि जो बाहर के मुल्कों में किए जाते थे, जिससे उन कपल्स के यहाँ बच्चों की पैदाइश जो है वो पॉसिबल हुई जिनके यहाँ बहुत साल पैदाइश नहीं होती थी. इनफर्टिलिटी की वजह से हमारी ख़वातीन को वैसे भी सीरियस मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है. इसी तरह से ऑल्दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी आर नंबर 1 प्रायोरिटीज. द नीड फॉर एक्सेसिबल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज is very high. There is a great need that the countries introduce reproductive technologies. However, ये जहाँ पे एक sigh of relief है for those couples who are unable to give birth. On the other hand, it is one of the factor because the human beings, the technology, the medical science, it has a now command कि वो infertility के issues को control कर सकते हैं, तो उससे यकीनन आबादियों में इजाफा होता भी हमें जो है वो नज़र आता है. Latest technology, advancement and more discoveries in the medical science, it has become possible for a couple who are unable or who had been unable to conceive, they undergo the fertility treatments and they have their own babies finally. बहुत ज़्यादा सिस्टम, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स
अब इसमें सामने जो है वो हमें नज़र आते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप माजी के सफ़हात को पीछे की तरफ करके देखें, तो पाकिस्तान में जो पहला फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जो कामयाब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो दुनिया भर में 1960 और 70 की दहाई में किया जाता था, 90 की दहाई में पाकिस्तान आया था। और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लाहौर में सबसे पहला कामयाब तजर्बा किया गया था। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ fertility treatment of Pakistan, and it was a very very successful scientific experiment कह लीजिए, scientific procedure by the leading gynecologists of Lahore। और उसके बाद 1990 से लेकर पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी जो है वो हासिल की है। यही वजह है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ना हो और कपल्स जो हैं वो औलाद से महरूम ना हो। बहरहाल क्योंकि हम औलाद से महरूम रहें, बहरहाल क्योंकि हम कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि किस तरह से ये मसले, ये जो फर्टिलिटी जैसे या इनफर्टिलिटी जैसे जो इश्यूज़ थे, माजी में इतना बड़ा मसला थे और आज ये मसला नहीं है। Though it only plays a minor role in the comparison to the other causes of overpopulation, improved fertility treatments have made it possible for people to have children। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इनफर्टिलिटी की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि जो दूसरे रीजंस हैं, एडवांसमेंट्स हैं या और चीज़ों में हमने एडवांसमेंट किया, मोर्टालिटी पे हमने कंट्रोल किया बाय कंट्रोलिंग डिफरेंट डिजीज़, उसके मुकाबले में इसका वो रोल तो नहीं हो सकता। बहरहाल फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि डिस्कस किया जा सकता है और बताया जाता है कि हाउ इट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। अगर दुनिया में आज की ऐसे मुल्क हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जो कि पुअर हैं, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी की वजह से आपको मसाइल अभी भी नज़र आते होंगे और चाइल्डलेस कपल्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो ज़ाहिर है आबादी की एक सर्टन सेगमेंट में ये महरूमी होगी और आबादी में इजाफा इस तरह से मुमकिन नहीं होगा। Now most have the option of conceiving children even if they may not have been able to do so without such treatment. Today there are effective medicine which can increase the chance of the birth of conception and lead to the rise in the birth rate। आज हम 21वीं सदी में जैसा कि दाखिल हो चुके हैं, आज इवन ये तक जो मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हम पॉपुलेशन स्टडीज़ की चीज़ें पढ़ रहे हैं और इस पर कोई ऐसी सेंसिटिविटी होनी नहीं चाहिए कि आज माँ की कोख जो है वो भी मुख्तलिफ, हम इसमें लोगों के पास चॉइसेस हैं, सेक्स के ऊपर लोगों के पास चॉइसेस, ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि यू कैन डिटर्मिन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इफ़ यू वांट अ गर्ल चाइल्ड, इफ़ यू वांट अ बॉय चाइल्ड, सो दे आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। All these advancement they have been quite responsible for the rise in the population, specifically in the countries who are already combated with the issue of the overpopulation।